इस वक्त की बड़ी खबर ईरान से आ रही है, जहां इसराइल ने भीषण हमला करके पूरे ईरान में इस वक्त चीख पुकार मचा दी है। जी हां, 13 जून 2025 तारीख जो मध्य पूर्व के नक्शे को हिला देने वाली साबित हो गई है। इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान पर भीषण हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख जनरल हुसैन सलामी की मौत की खबर भी आ रही है, जो लगातार ईरान और मध्य पूर्व के कई मीडिया संस्थानों से आ रही है। साथ ही कई परमाणु और सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। यह आज की सबसे बड़ी और खतरनाक खबर है। ईरानी स्टेट टेलीविजन की रिपोर्ट के अनुसार इस्राएली वायुसेना के हमलों में कम से कम 4 वरिष्ठ अधिकारी मारे गए हैं, जिनमें इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर इन चीफ जनरल हुसैन सलामी तक का नाम शामिल है। तेहरान, नतांज और इस्फहान तीनों शहरों में धमाकों की गूंज से रात का सन्नाटा जो है वो टूट गया है। इसराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान के उन परमाणु ठिकानों को नष्ट कर दिया है जहां यूरेनियम संवर्धन किया जा रहा था, यानी जो संवर्धन ईरान ने अब तक किया था उसे नष्ट करने का दावा किया गया है। ऑपरेशन को नाम दिया गया है राइजिंग लायन। सबसे बड़ा झटका ईरान को तब लगा जब IRGC के शीर्ष नेता हुसैन सलामी की मौत की खबरें आने लगी। साथ ही ईरान के सेना प्रमुख मोहम्मद बाघेरी को लेकर भी कई दावे किए जा रहे हैं। इधर 2 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक भी हमले में मारे गए हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले को आत्मरक्षा का कदम बताया है और उन्होंने बताया कि ईरान के पास 15 परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम हो गया था, जिसे किसी भी हाल में रोका जाना जरूरी था। दूसरी ओर ईरान ने भी इसराइल को कठोर जवाब देने की चेतावनी दी है। तेहरान में हाई अलर्ट जारी है, वायु रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है और सेना को सीमा पर तैनात किया जा रहा है। अमेरिका ने हमले से अपनी दूरी बना ली है और स्पष्ट कर दिया है कि वो इस ऑपरेशन में शामिल नहीं है। और वाशिंगटन ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाता है तो फिर ईरान के लिए बुरा वक्त होगा। अब पूरी दुनिया की निगाहें तेहरान और यरूशलेम पर टिकी हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि जिस हिसाब से इसराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है, इससे यह साफ हो जा रहा है कि ईरान को कहीं ना कहीं इस हमले के बाद से अब जवाब देना उचित होगा। और दूसरी तरफ अमेरिका भी ये समझ चुका है कि ईरान की तरफ से भीषण हमला हो सकता है, इसलिए उसने ईरान से कहा है, तेहरान से कहा है कि आप अमेरिकी बेसों को निशाना ना बनाएं। जबकि खबर ये आ रही है कि इसराइल ने जो हमला किया है, IDF के जो जेट गए थे वो इराक के रास्ते गए थे, यानी इराकी बेस का इस्तेमाल किया गया था। इराक में अमेरिका का सैन्य अड्डा है और इस वक्त की बड़ी खबर है कि ईरान पर भीषण हमला हुआ है। इसराइल की तरफ से यह हमला हुआ है, इसमें ढेर सारे लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। तेहरान में कई बिल्डिंगों में आग लग गई और कई बिल्डिंगें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। परमाणु ठिकानों को, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है ईरान की तरफ से। तो यह बड़ी खबर आ रही है ईरान से, जहां पर इसराइल ने बहुत बड़ा हमला किया है। ये सुबह सुबह ही भारतीय समय के मुताबिक तकरीबन 6:30 बजे के आसपास IDF की तरफ से इस बात की कंफर्मेशन दी गई कि उन्होंने ईरान में हमले किए हैं। नेतन्याहू का ऐलान है कि हम युद्ध में हैं और एक तरफ हमास से युद्ध चल ही रहा था और दूसरी तरफ हूती जो है वो लगातार अटैक कर रहे थे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर कि ईरान पर भी इसराइल ने धावा बोल दिया है। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. 80 years ago, the Jewish people were the victims of a Holocaust perpetrated by the Nazi regime. Today, the Jewish state refuses to be a victim of a nuclear Holocaust perpetrated by the Iranian regime. Now, as Prime Minister, I've made it clear time and again,
Israel will never allow those who call for our annihilation to develop the means to achieve that goal. Tonight, Israel backs those words with action. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. Last year, Iran fired 300 ballistic missiles at Israel. Each of these missiles carries a ton of explosives and threatens the lives of hundreds of people. Soon, those missiles could carry a nuclear payload, threatening the lives not of hundreds, but of millions. Iran is gearing up to produce 10,000 of those ballistic missiles within 3 years. Now just imagine 10,000 tons of TNT landing on a country the size of New Jersey. This is an intolerable threat. It too must be stopped. Iran is now working on what it calls the new plan to destroy Israel. You see, the old plan failed. Iran and its proxies tried to encircle Israel with a ring of fire and to attack us with the horrible attack of October 7th. But the people of Israel, the soldiers of Israel, rose like lions to defend our country. We crushed Hamas, we devastated Hezbollah, we hit Iranian proxies in Syria and Yemen. And when Iran directly attacked us twice last year, we struck back inside Iran itself. Yet in defending ourselves, we also defend others. We defend our Arab neighbors. They too have suffered from Iran's campaign of chaos and carnage. Our actions against Iran's proxy Hezbollah led to the establishment of a new government in Lebanon and the collapse of Assad's murderous regime in Syria. The peoples of those two countries now have a chance for a different future, a better future. So too do the brave people of Iran, and I have a message for them. Our fight is not with you. Our fight is with the brutal dictatorship that has oppressed you for 46 years. I believe that the day of your liberation is near. And when that happens, the great friendship between our two ancient peoples will flourish once again. I want to assure the civilized world, we will not let the world's most dangerous regime get the world's most dangerous weapons. And Iran plans to give those weapons, nuclear weapons, to its terrorist proxies. That would make the nightmare of nuclear terrorism all too real. The increasing range of Iran's ballistic missiles would bring that nuclear nightmare to the cities of Europe and eventually to America. Remember, Iran calls Israel the small Satan. It calls America the great Satan. And this is why for decades, it's led millions in the chants of death to Israel and death to America. Today, Israel is responding to those genocidal calls with action and with a call of our own. Long live Israel and long live America. Our action will help make the world a much safer place. I want to thank President Trump for his leadership in confronting Iran's nuclear weapons program. He has made clear time and again that Iran cannot have a nuclear enrichment program. Today, it is clear that Iran is just buying for time. It refuses to agree to this basic requirement of peaceful nations. That is why we have no choice but to act, and act now. The hardest decision any leader has to make is to thwart a danger before it is fully materialized. Nearly a century ago, facing the Nazis, a generation of leaders failed to act in time. They were paralyzed by the horrors of World War I. They were determined to avoid war at all costs, and they got the worst war ever. They adopted a policy of appeasement. They closed their eyes and ears to all the warning signs. That failure to act resulted in World War II, the deadliest war in history. It claimed the lives of 60 million, including 6 million Jews, a third of my people. After that war, the Jewish people and the Jewish state vowed, never again. Well, never again is now. Today, Israel has shown that we have learned the lessons of history. When enemies vow to destroy you, believe them.
When enemies build weapons of mass death, stop them. As the Bible teaches us, when someone comes to kill you, rise and act first. This is exactly what Israel has done today. We have risen like lions to defend ourselves. Over 3,000 years ago, Moses gave the people of Israel a message that has steeled their resolve ever since. Be strong and courageous, he said. Today, our strong and courageous soldiers and people stand together to defend ourselves against those who seek our destruction. And by defending ourselves, we defend many others and we roll back a murderous tyranny. Generations from now, history will record that our generation stood its ground, acted in time, and secured our common future. May God bless Israel. May God bless the forces of civilization everywhere. Thank you.